यूट्यूब बनाता है? हाँ। कितना खर्चा लगता है? After the epic fall from my bike just a few minutes back, I was extremely nervous for the next big challenge. This kind gentleman came to help me cross the river, and I knew if I fall again, there would be at least someone to help me get up. गीत तो नहीं जाऊंगा ना? बैग भी थोड़े रखी. The only thing that kept haunting my mind was this incident. But anyway, I had to do it as there was no way back. So, let's go. Finally, it's done. And to be honest, that was easier than I expected. ठीक. Thank you. इधर से ना? But wait, the challenge was not yet over. More off-roading was yet to come, and that too on an extremely steep climb. As you can see, I was clearly struggling. My bike stopped quite a few times, and I was not at all feeling confident to ride on this road. Thank you, भैया. With the help of the same people, I somehow managed to continue my ride. Another round of off-roading for a few more kilometers. Clearly, my bike was also not in a good mood that day. I was just hoping the bad road to end really soon. सीधा. And finally, there it is. I reached Bijanbari at around 1 o'clock in the afternoon. But I didn't know exactly where to go and what to do, as I had no plans beforehand. I was a little hungry and needed a break for some time. So I went to this place called Bijanbari to have some food and break. I made a quick plan of walking around the village to enjoy the beauty of the nature and the greenery of the village.
Chhota Rangeet river flows through this small village. थैंक यू हाँ बाय I also decided to spend some time by the riverside and planned to take a bath as well. Through this shortcut, I made my way to the river. I sat here for quite some time, enjoying the view and the sweetest sound of the river. I was thinking whether I should really take a bath in this river or not. The water was attractive, but the temperature was too cold. And that's when I decided to cancel the plan. Just when I was leaving the place, I met these two lovely kids and one of them wanted to take a bath in the river. स्विमिंग तो डर लग रहा है नाम क्या है Thank God I didn't do that. ठंडे वैसे Time to go back as it was getting dark. It was a different kind of experience spending a day in the trip completely unplanned. With an eventful journey and a lovely afternoon, Bijanbari was really a nice and unique experience. ऐसे टर्निंग है ना यहाँ से जाओगे तो ऐसे मिलेगा इतना जन ऊपर की तरफ जाना सीधा स्ट्रेट दार्जिलिंग Time to go back to Darjeeling, and this time I followed the longer route, but the road was much better. यूट्यूब हाँ। क्या करना पड़ेगा उसका वीडियो आज सुनो ना मेरा भी थोड़ा काम है बात यूट्यूब बनाता है हाँ कितना खर्चा लगता है कितना खर्चा लगता है हाँ खर्चा कुछ नहीं लगता है अच्छा तुम करोगे हाँ तुम करोगे हाँ देखो करो ना फोन से करो ना फोन से तो करते हैं लोग मेरा तो होम स्टे बनने वाला है होम स्टे ना क्या है होम स्टे जो होम टूरिस्ट स्टे? लोग रहता है ना हाँ 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 वही उसी के लिए मैं सोच रहा हूँ इसमें अच्छा तो ना फोन ना- ऐसे नम- ऐसा फोन में नहीं चलेगा स्मार्टफोन निकालो स्मार्टफोन तुम खुद के बारे में बताओ ओ अच्छा मैं अभी बिजनबाड़ी से आया हूँ मैं अभी मेरा घर पे जा रहा हूँ और यहाँ से पुल बाजार 1 किलोमीटर है उसका बाद मेरा घर आएगा मेरा छोटा होम स्टे बनने वाला है बहुत बढ़िया ऐसे बता सकते हो ओ ऐसे कि आप इधर पे आओ यहाँ पे रहो ये मेरा होम स्टे है होम स्टे और यूट्यूब पे छोड़ दो हो गया ऐसा वाला से नहीं होगा ऐसा कैमरा से नहीं होगा हाँ होगा नहीं किया ना अभी तक वो खरीद ना करने से इससे से भी होगा होगा YouTube होगा लोग इससे तो करते हैं करते हाँ इससे भी इससे- होगा होगा बिल्कुल होगा पहाड़ अभी पीछे अभी कुछ टेंशन नहीं है अभी तुम जहाँ भी जा सकता हो यहाँ पे का लाइन ऑर्डर भी बहुत अच्छा है
हाँ, ममता दीदी पहाड़ के लिए बहुत डेवलप किया है। हाँ, सब्सक्राइब पे क्लिक करो। हो गया सब्सक्राइब। वो घंटी भी बजा देना, और वो ऑल है ना, ऑल ऊपर, हाँ उस पर क्लिक करो। हो गया। हाँ, सब्सक्राइब पे क्लिक करो। हो गया सब्सक्राइब। वो घंटी भी बजा देना, और वो ऑल है ना, ऑल ऊपर, हाँ उस पर क्लिक करो। हो गया। कहाँ से लेके आया बाइक? कलकत्ता से। वो बाइक हाँ वहाँ से लेके आया? हाँ। इतना दूर? बाप रे, कितना टाइम लगा कलकत्ता से सिलगुड़ी पहुँचने में? 15 घंटा। It was a 25 kilometers long ride from Bijanbari to Darjeeling following this route. The evening was beautiful and the road was super smooth. My only worry was the darkness, as I really hate riding in the dark. Nevertheless, the road was good, so I didn't have to face much trouble. After more than 2 hours long ride, I finally reached Darjeeling. To see what happened next, stay tuned.